वेलकम टू दिस वीडियो ऑन स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड सेटअप। सो स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ, मैं एक्चुअली जो लास्ट टाइम जो ट्रेड्स डिस्कस किए थे उसका एक समरी जैसा दे देता हूँ। सो फाइन, सो स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ विद कोल इंडिया, वी कैन सी दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक्स विच इज ऑन आवर लिस्ट दिस वीक। सो आज भी ये वीक में भी आई वुड बी लुकिंग एट कोल इंडिया। रीजन बीइंग 50 MA bounce है, and then after that it's been able to hold above 20 moving average. So आई थिंक इट लुक्स प्रिटी गुड। अभी ये कंसोलिडेशन जोन में है। लास्ट टाइम भी हम लोग ने आई बिलीव बात किया था, ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये अगर क्लियर करता है दैट मीन्स इट हैज मोमेंटम, प्लस 150 का साइक बैरियर भी क्लियर हो जाएगा। देन कम्स ONGC। आई एम लुकिंग एट द वीकली चार्ट बाय द वे, सो जस्ट वांटेड टू क्लियर दैट। ONGC हम लोग देख सकते हैं 20 MA क्लियर करने के बाद रीटेस्ट किया, एंड देन इट्स एबल टू come up after that. RSI is right at 60, which means momentum काफ़ी अच्छा है। Now what I would be looking at for this, ठीक है, हम लोग पास्ट में देख सकते हैं कि इट हैज़ रियली टेकन स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम 200 MA। तो अगर 200 MA तोड़ तोड़ सकता है, इफ दैट्स पॉसिबल, देन आई वुड पर्सनली नॉट रूल आउट दीज लेवल्स ऑल्सो। सो पहला रेजिस्टेंस जैसा बोल सकते हैं, सो इट माइट बी अराउंड 137 के आसपास अगर 200 MA तोड़ा, देन अराउंड 150, और उसके बाद 170 175 के आसपास आ सकता है, टू 177 और सो। So ONGC also looks pretty cool. Again, these are the trades that we'd identified last week. IDFC First Bank is also on our list this week as well. तो IDFC First Bank हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से बाउंस हुआ है 50 MA से, और अदर 200 MA से, एंड नाउ इट्स राइट अंडर 50। ओवरऑल काफ़ी स्टिल काफ़ी अच्छा दिख रहा है मेरे हिसाब से। बट पॉसिबली इफ़ यू आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन जस्ट 200 MA, मूव थोड़ा सा चला गया है। इफ़ यू आर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन अदर स्टफ ऑल्सो, देन पॉसिबली मूव अभी तक रह सकता है। और इफ़ यू आर आइंग फॉर अ लार्जर सॉर्ट ऑफ पीस ऑफ द पाई, सो अगर हम लोग SL रखे, ये जो स्पिनिंग टॉप जैसा था उसके नीचे, so the SL right now is around 15%. That is a huge amount. But okay, but if you're willing to hold on to it, or by you I mean anyone, I mean, this is not advice, this is just information. If someone is willing to hold on to it till 69, ठीक है, देन 50% प्रॉफिट के लिए 15% जितना रिस्क है, सो देन इट बिकम्स अ वायबल ऑल्टरनेटिव। बट अदरवाइज पॉसिबली मूव थोड़ा सा गया है। इफ़ यू आर एबल टू गेट ऑन इट लास्ट वीक, देन फिर भी ठीक ठाक था, बट एज ऑफ नाउ पॉसिबली नॉट। नेक्स्ट कम्स औरोफार्मा। औरोफार्मा ऑल्सो लुक्स प्रिटी गुड। 200 MA का रीटेस्ट किया, दिस एज वी डिस्कस्ड लास्ट वीक ऑल्सो, इट वॉज अ स्विफ्ट करेक्शन, and after that we're seeing it catching. Now 757 ka fib will be important to hold. Dawat is another stock on our list. Again, these are last week ke stocks, but many of them are valid this week as well. So that's why I'm talking about these. दावत में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेवल्स जो थे, ठीक है, मैं एक्चुअली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही स्ट्रेच कर देता हूँ। हाँ, ये वाला जो लाइन है 64 65 का, वो अप्रॉक्सीमेटली जो लाइन है दैट इज बीइंग द सपोर्ट राइट नाउ, बिकॉज दैट वाज द रेजिस्टेंस जोन हियर, एंड नाउ इट्स approximately the support area as well. 50 MA भी है। So overall Dawat also looks good. This is a trade that I've personally taken. Glenmark was there last week. Right now it's also still 200 MA trade. KSCL is also there, 50 MA के ऊपर आ गया है। KSCL was actually able to recover. You're seeing this long trade का thing because KSCL का भी मैंने trade लिया है, position is on. Oil India was actually one of the better trades last week that we had discussed. Already 8.5% ऊपर है, so that looks good. If you watch the weekly analysis, मैंने Oil India के बारे में भी बात किया है थोड़ा सा। Raymond is the next stock, 4.6% up, since last week when we had discussed. So वो भी काफ़ी अच्छा है। And Adani Ports is also there. Adani Ports is just above 20 MA, so that also looks good. The only thing is, ये वाला जो crisis वाला candle आया था, I believe this is when that fishy news thing was announced. नो पन इंटेंडेड। और उसके बाद का जो हाई है, मतलब ये वाला जो लेवल है, उसको वो टेस्ट कर रहा है। सो आई थिंक इट इज़ अ क्रूशियल पॉइंट ना 750 के आसपास। Then finally coming to Bajaj Auto, it's at 50 MA, so still a valid trade in my view. Now coming to the new trades, new stocks for this week. So the first one that I have on my list is another major stock, another large cap, which is Kotak Bank. Kotak Bank देख सकते हैं हम लोग 50 MA को जस्ट तोड़ा है, and this is one of the higher closes that we've seen.
और अगर 1820 के ऊपर होल्ड कर सकता है 1820 1825, देन आई डू बिलीव दैट इट हैज़ अ चांस टू test 2000 as well. Next stock which is new on our list is SBI. So you're seeing two banks on our list. ठीक है, SBI अगर देखते हैं हम लोग देख सकते हैं 435 का रेजिस्टेंस के आसपास ही है वीकली चार्ट पे, तो स्पेशली ट्रू है. सो अगर 435 को क्रॉस करता है, if it's able to close above 435 on a weekly basis, then it will be the highest close for SBI, which is very important, right? So वो देखते हैं वो कैसा जाता है. Next stock that we have is not a top stock per se, but it's definitely one of the larger companies that we have. So that's Shri Cement. Shri Cement का actually 2 weeks before also we had spoken about it, I believe. उसके बाद काफ़ी ऊपर आ गया, अराउंड 20% जितना आ गया है. इट स्टिल लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, रीज़न बीइंग क्योंकि ये जो एरिया है, राइट, 32,000 का, उसके आसपास आ रहा है, एंड इट हैज़ टेकन सपोर्ट राइट फ्रॉम 25514. सो ओवरऑल, इवन दो इट माइट नॉट बी the right time to actually enter right now, but it still looks like a decent case study for how price is behaving, because here then we can see this resistance was there 2960 का, वो लेवल फिर से शायद रीटेस्ट हो सकता है. सो आई थिंक इट कुड बी अ गुड स्टॉक टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ प्राइस इज बिहेविंग. नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव इज धानुका. धानुका एग्रीटेक देखते हैं 50 MA के आसपास ही है, राइट एट 50 MA, RSI 40 as well. Dhanuka could also be a pretty interesting pick, and overall also I believe it looks good. See, we can see good bullish trend overall. यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया था ना, I've spoken about market structure breaks quite a lot because MSBs from what I've seen they are one of the better trade setups. तो अगर यहाँ पे MSB हुआ था, if you would have entered here, then let's say you were stopped out here, you could have still done around 15% on a conservative side. So MSBs in general I do like. So MSB के बाद का trade है like e-clerks and like all of those. So I think there's a good chance that that might work as well. Then next is Gati. गति we can see 20 MA की ट्रेल अच्छी गति से जा रही है, no pun intended, just kidding, pun completely intended. We can see that 20 MA line is just nicely trailing, which is a good sign, positive sign, bullish sign. So overall I'm sure कि एक parallel channel भी draw कर सकते हैं हम लोग. Again these channels are mostly indicative, not really exact. मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे चैनल को. It's a little trickier on a laptop, but हाँ, this is that channel that we can see going on. So let's see अगर गति भी अच्छी गति से ऊपर जा सकती है तो that's another stock that we're looking at. Next comes GIC Housing. GIC Housing में हम लोग देख सकते हैं कि 250 MA का तो ऊपर बाउंस किया है. Now it is around 20 MA. Why is this important? Because I think it will be a crucial sort of sign, because if we look at the daily chart पे dip के बाद 200 से support लेके यहाँ पे consolidate कर रहा है. I'm willing to bet that अगर हम लोग retracement करें तो it will be at an important level. Yeah, see 38.2. I had not done a retracement earlier. ठीक है, this is just how price behaves. So 38.2 अगर beat करता है then I think it does have good potential. What I would be looking at with GIC is possibly this level right here, which is the 50 moving average. So देखते हैं GIC कैसा जाता है. वीकली चार्ट पे स्विच कर देते हैं वापस. एंड द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी हैव is actually Venky's. Now, Venky's is a very interesting setup in my view because we've spoken about it at length. Okay, I have a dedicated video on Venky's 100% plus ROI trade के बारे में. And what we can see here, I've actually used parallel channels, fib channels for this, not parallel channels. और हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है, ओके, यहाँ से ही रेजिस्टेंस ले रहा है. ऑन द वीकली ऑल्सो इट्स होल्डिंग. So I think this Venky's as a stock is very good to understand these Fibonacci channels. If you want to learn more about Fibonacci channels, make sure you comment so that I know that okay, these many people want to learn, and I'll be happy to make a video on it. Next stock that we have is HDFC AMC. AMC हम लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कर रहा है, and it's one of the highest closes that it's made in the past couple of years, past year at least. ये एक हाई क्लोज था. द क्लोज वाज एट 3244. आज का क्लोज इज एट 3248. सो इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट क्लोजेस दैट इट्स मेड सिंस या 17 Feb 2020. 1.5 साल का हाईएस्ट क्लोज है, विच इज गुड. So next, if it's able to hold above this level and momentum is there, we can see momentum looks good. If it's able to hold above this level, then I would possibly say कि 3400 3500 का ये जो fib extension है, that is where I would be looking at. So let's see if that actually happens.
नेक्स्ट स्टॉक इज वक्रांगी. वक्रांगी ने काफ़ी अच्छा किया एक्चुअली. इफ़ यू वर एबल टू ट्रेड इट इंट्राडे और लाइक BTST टाइप्स, तो काफ़ी डिसेंट ROI दिया है वक्रांगी ने. नाउ वी कैन सी इट्स एट 50 MA right here, 50 WMA. So I think overall as a stock it appears to be doing pretty well. I'll switch to the daily chart as well. Daily chart पे ऐसा दिख रहा है. So I think it is yet another stock that is good to observe. We can see there's like a market structure break of sorts. Let's see if it holds that MSB. अगर होल्ड करता है then it could be good. Next is AB Capital. AB Capital में भी मेरा ट्रेड है. It's on. I had entered I believe somewhere here or here. और फिलहाल ऑन है. I'm sitting on around 7 to 8% ROI. Basically last week का जो भी प्रॉफिट था वो I'm seeing in my portfolio. I think this is also a good sort of setup. एंड द रीज़न आई, हाँ मैंने यहाँ पे एंटर किया था. आई थिंक द रीज़न वाई इज बिकॉज प्रीवियस कैंडल है, इट्स लाइक अ हैमर पैटर्न, राइट. वेरी गुड कैंडल. सपोर्ट फ्रॉम एन इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज. इफ वी गो टू द डेली चार्ट पे भी काफ़ी डिसेंट दिख रहा है. आई थिंक आई एंटर्ड हियर और समथिंग. बट हाँ, ओवरऑल वो रीज़न से एंटर किया. अभी 50 MA का रेजिस्टेंस दिख रहा है. प्लस 23.6 फिब है. But I think that's not a deal breaker of sorts at this point. So let's see how that goes. Next stock is Vodafone Idea. Okay, Vodafone Idea, we look at the weekly chart. Weekly chart of Vodafone Idea looks pretty good. ठीक है, अगर यहाँ पे एंटर किया होता, hypothetically speaking, you'd be sitting on 40% ROI in 1 week, which is insane, right? It's nuts to think about it. So काफ़ी काफ़ी crazy है. और अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं, ठीक है, वोडाफोन आइडिया का, देन इट्स एट 50 MA बाउंस है. सो इफ इट्स एबल टू सस्टेन दिस लेवल, then there's a chance it will test 200 MA. 200 MA is actually just 13% away, right? 13% ROI मिल सकता है if it just tests 200 MA. So even though distance उतना नहीं दिखता, that's because the absolute amount is that low. But overall, it does have potential to show us good upside, in case it actually bounces up. Next is ITC. ITC, we've spoken about it for a while now. Okay, this is the daily chart. So we can see it's trailing along the 250 and the 20 moving average, which is very interesting. Weekly chart देखे something similar, 50 moving average and 20 moving average. Now it's actually consolidating. Why, I'll show you. ठीक है, ये वाले तो हम लोग को दिख रहे हैं. यहाँ पे यही जो रेड जो ग्रीन हाईलाइट है वहाँ पे ही है. एंड इट्स मेड लाइक एन इक्विवेलेंट हाई टू दिस. So if it breaks this first target here, second target here, and then obviously 200 MA, all of that is there. But ITC overall looks very good. We can see that it's like consolidating here. So let's see again, possibly अगर कैंडलस्टिक पैटर्न या वैसे सब ड्राइंग्स और सब बनाने हैं, तो मे बी डिसजॉइंट एंगल और समथिंग माइट वर्क इन दिस केस. So let's say we draw something here and then we draw something like here, और थोड़ा सा इसको नैरो शायद कर सकते हैं, and then it might just fit. But this is just to like fit lines. This isn't really valid for for an analysis के हिसाब से. I think this green highlight, moving averages and the price consolidating is very important. Next stock is REC Limited, REC Limited. अगर weekly chart दिखाता हूँ, we can see it's appearing to be good, and we can see it's in the parallel channel as well. So if I just hide the drawings, if I just hide the indicators, this is what it looks like, right? It's heading into this zone. So let's not kid ourselves. It's not like all is rosy, all is good. ये zone में आ रहा है, but it is consistent bull trend, right? There's a good chance that it will keep up this bull trend, and when it does, I think it will be a pretty interesting setup. ठीक है, this is what it looks like on the daily chart, right? This level right here of 156 157 is the big hurdle. और अगर मैं मूविंग एवरेजेस दिखा देता हूँ, RSI दिखा देता हूँ, RSI is just at 60. Moving averages 20 and 50 MA support. So let's see how that goes. यहाँ पे 200 MA का support था, so possibly this would have been a good candle to enter, and if we would have entered there, 9% ROI then and there. So let's see how that goes. Anyway, that's it for this one. See you in the next. If you have any questions, feel free to ask. See you in the next one. Happy trading.